हेलो स्टूडेंट्स चलो ए देखा डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी माने तुम ओडिया रे विचार भित्तिक गणतंत्र राइट। ये विचार भित्तिक गणतंत्र प्रथमे तुमर जोसेफ बेसेट्स बोलिबा जने राजनीतिज्ञ सॉरी राजनीति तत्वविद ये आंके कौन करथिले तांकर गोटे बही लिखछन पिला माने मिल्ड वॉइस ऑफ रीजन आईरे से आ विषय प्रथम प्रयोग करते शब्दटी डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। ये डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी इज टोटली डीलिंग विथ डिसीजन मेकिंग इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड डिसीजन मेकिंग पिला माने गणतंत्र सबुठ गोटे मोस्ट महत्वपूर्ण विषय राइट। तेणु तांकर आ गोटे बही अच्छे देखो मेजॉरिटी प्रिंसिपल्स इन रिपब्लिक गवर्नमेंट बोलिकी राइट। अच्छा डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी तापर अच्छे डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी द मेजॉरिटी प्रिंसिपल्स इन रिपब्लिकन गवर्नमेंट आईर मध्य से दर्शाई डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी इज दैट डेमोक्रेसी इन विच द मेकिंग डिसीजन प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग on the must be deliberative, thorough, and which should protect public interest, national interest. Here individual liberty, equality, and protection of a country is much पॉलिसी मेकिंग प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेशंस ये सब आमर देख इंडिया रे से प्रोसेस अच्छी फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग थर्ड रीडिंग हाउ बिल बिकम्स एन एक्ट रे नहीं कि ये सब कौन डेलिबरेट स्टडी है पर फाइनल डिसीजन विल बी मेड। सो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये जोसेफ बिस्टे प्रथम एटा को आ विषय आलोकपात करते। दिस इज डेवलप्ड इन 19th century स्टूडेंट्स। In the last part of the 19th century this has been developed and it is very important nowadays that it is based on dvandva means conflict and samata means consensus. So are the two key words of this deliberative democracy, remember this. And let us focus upon what things I would pilamane see the advocates of this deliberative democracy are mostly John L. Starr and John Castile, then David Held, John Rush, and many other are there, and James James Hickskin are some of the people who had much focused on this deliberative democracy, and they believed that it has certain features upon which it depends on or it can be distinguished and those are what it believes in information means data based तथ्य उपर आधारित तथ्य भित्तिक एटा नले आलोचना पर्यालोचना माध्यम निष्पत्ति ग्रहण करवा गणतंत्र को तो आम कहचे ना डेलिबरेट बा तुमर कौन ओडिया रे विचार भित्तिक गणतंत्र। तेणु आप तथ्य महत्वपूर्ण। सो यह तथ्य उपर आधारित राइट। अच्छा यार विविधता उपर गुरुत्व दि जाए तापर न्यायपरायण बोले कन्सेंसियसनेस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी एंड हियर इक्वालिटी इज गिवन मोर प्रायोरिटी। सोशल इक्वालिटी पॉलिटिकल इक्वालिटी इकोनॉमिक इक्वालिटी उपर बहुत प्राधान्य दि जाए गणतंत्र रे। एंड अनदर थिंग इज दैट it is dynamic and provincial by nature। यह गतिशील वो अस्थायी प्रोविजनल माने पिला माने अस्थायी रूप में रही था। तो this has been supported by I have told you many advocates names, all of them have supported this for its database nature, scientific nature, and it is universal also। Okay students, किंतु पिला माने चार्ल्स बटबर्ग is a person who criticized this, democracy. He said it is more or less like the present liberal democracy, where we put more emphasis on data, but these people are neglected most of the times. And secondly, he said it is like direct democracy, भ्रमात्मक धारणार प्रभाव ये मुक्त नुहे। इट इज नॉट फ्री फ्रॉम द डिफॉल्ट्स ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी और यू कैन से लिबरल डेमोक्रेसी। एंड
Anyhow, this is said to be an important concept upon which the successful of democracy is depends, because making decision is not an easy thing in the democratic setup government. So it's all making decision in democratic setup deliberately deals with deliberative democracy. Okay, students, thank you very much. Thank you very much for watching.